Two confusing words. Difference between altogether and altogether. Very useful for CSEs, FPSC, PMS, SPSC and KPSC. So let's start the video. Altogether means completely or totally, मुकम्मल तौर पर. I stopped seeing her altogether. मैंने उसको मुकम्मल तौर पे देखना बंद कर दिया. He had married several times and had 46 children altogether. उसने कई शादियां की और बैक वक्त 40 बच्चे पैदा किए. Altogether it was a great evening, or you can say completely it was a great evening. एक बेहतरीन शाम थी. I don't think you have been altogether honest with me. मुझे नहीं लगता कि आप मुकम्मल तौर पे मेरे साथ ईमानदार रहे हैं. I don't think you have been altogether honest with me. The other word is altogether. बैक वक्त means all the members of a group, किसी भी ग्रुप के अफराद. We went all together to the party. हम पार्टी में एक साथ गए या बैक वक्त गए. all together या इकट्ठे उर्दू में आप कह सकते हैं. They protested all together for their demands. उन्होंने अपनी डिमांड्स के लिए एहतजाज किया. You can avoid this method altogether and get in easier. आप मिलजुल के इस मसले से, इस मेथड को हल कर सकते हैं और कोई आसान सा हल ला सकते हैं. Let's sing happy birthday all together now. आइए हैप्पी बर्थडे एक साथ गाना गाते हैं. Can you put your books all together in this box? क्या आप अपनी किताबें इस बॉक्स में एक साथ रख सकते हैं? Can you put your books all together in this box?